हाय बच्चों, चलो लास्ट हमने जो ग्राफ्स करे थे एट दैट टाइम मैंने कहा था कि वी विल डू द PYQs. सो आई होप यू ऑल आर रेडी कि वी विल हैव अ सेल्फ टेस्ट फॉर आवर पॉलिनोमियल्स, राइट? क्योंकि एग्जाम्स में क्या पूछते हैं ना, देखो बेसिकली होता सब कुछ सेम ही है कि जो हमने पढ़ा हुआ है, बट कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चंस देख के हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इसमें हमें करना क्या है. सो वंस विल प्रैक्टिस द PYQs यू विल गेट अ आइडिया कि भाई हाँ क्वेश्चंस इस टाइप से पूछे जाते हैं, राइट? चलिए बच्चों, लेट्स सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द PYQ. Here if one of the zeros of the quadratic polynomial is -3, then the value of k is. So let us say the polynomial is given to you, k minus 1 x square plus kx plus 1. It has been told that one of the zero is -3. So if it is said that -3 is a zero of p of x, therefore p of -3 should be equal to 0. यानी जब भी आपको एग्जाम में ऐसा कुछ दिया जाए, कोई एक जीरो स्पेसिफाई कर दिया जाए, you can use this thing, okay, that p of -3 or whatever the value is given should be equal to 0. अब हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, we will just substitute this value as -3 in place of x. So p of -3 which is equal to k minus 1 square of -3 plus minus 3k plus 1, it is equal to 0. So 9k minus 9 minus 3k plus 1, which is 6k minus 8 is equal to 0. Therefore 6k is equal to 8. Therefore k is equal to 2, 3, 2, 4. So it will be 4/3. So this is the answer, that k is equal to 4/3. Question: if the path traced by the car has zeros, again यहाँ पे हमें zeros दिए हुए हैं -1 and 2, then it is given by. अब जब हमें पाथ पूछा गया है ना, पाथ मतलब कुछ नहीं है, they have asked you भाई पॉलिनोमियल क्या है, व्हाट इज द इक्वेशन ओवर हियर. अब यहाँ पे आपको जीरो दे दिए गए, राइट? हमारे पास जीरो क्या है, -1 एंड -2. कैन आई राइट माई अल्फा इज -1, माई बीटा इज 2. अगर आपको पता हो तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग ऐसा करते थे, x plus 1 x minus 2 is equal to 0, right? Therefore x is equal to -1 और x is equal to 2. अब ये जो चीज है ना, ये हमें यहाँ पे दी हुई है. I can write in this format, right? चलिए, तो मैंने ये फॉर्मेट बना लिया. Now actual we will start with the calculation. x plus 1 x minus 2 is equal to 0. खाली ब्रैकेट ओपन कर दो, तो x स्क्वायर प्लस x a प्लस b a प्लस b प्लस ab इज इक्वल टू 0. अब ये क्या है, दिस इज द फॉर्मूला. अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहती है जो आपके 8th स्टैंडर्ड में से ली गई है, इफ यू डू नॉट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, कोई बात नहीं है, सिंपल ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो, राइट? तो यहाँ पे अगर मैं ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना चाहूं तो x minus 2 plus 1 x minus 2 is equal to 0. x square minus 2x plus x minus 2 is equal to 0. x square minus x minus 2 is equal to 0. Just check it out. कुछ है ऐसा आंसर? So here we have the answer, that is option C. x square minus x minus 2 is equal to 0. चलिए, so I hope it is clear. Let us check the next. Now what should be added to the polynomial so that 3 is the zero of the resulting polynomial? अभी मैंने आपको बोला कि जब वो लोग आपको एक जीरो दे देते हैं तो वो वैल्यू को कुछ नहीं करना है, सीधे पुट ऑन करना है इन प्लेस ऑफ x. ये आपने 9th स्टैंडर्ड में सीखा ही है, ठीक है? तो अब यहाँ पे हमें ये दिया गया है, व्हाट शुड बी एडेड. ये 3 तो जीरो है,
पर अभी कुछ कमी है इसमें। तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ, लेट अस से माय पॉलिनोमियल x इज x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, राइट। अब मुझे क्या करना है, ये लोग बोल रहे हैं कुछ ऐड करो, सो 3 बिकम द 0. सो कैन आई राइट लाइक दिस, इफ आई वांट टू मेक 3, इफ आई वांट टू सब्स्टिट्यूट 3 इनटू दिस, I should add something over here. चलिए यहाँ पे कुछ ऐड कर देते हैं, so I add a alphabet A. अब जो चाहो वो अल्फाबेट लिख सकते हो, ठीक है, x मत लिखना वरना कंफ्यूज हो जाओगे। अब मैं क्या करूंगी, पॉलिनोमियल फॉर 3, तो यहाँ पे मैं 3 सब्स्टिट्यूट कर दूंगी, तो स्क्वायर ऑफ 3 माइनस 5 इंटू 3 प्लस 4 प्लस a, इट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैंने 0 क्यों लिख लिया, उन लोगों ने कहा है कि भाई इफ यू ऐड समथिंग then it will become a 0. Okay, it will be a 0 for this particular value. Value substitute कर दी, it is equal to 0. Now 9 minus 15 plus 4 plus a, which means that a minus 2. 9 plus 4 13, 13 minus 15 minus 2 is equal to 0. Therefore a is equal to 2. We have a value. So I hope it is clear. चलिए, now it is a 5 marker question that find the zeros first for the polynomial this, then write a polynomial whose each of the zeros is 2 more than the zeros of this. Is this clear? तो पहली चीज तो क्या करनी है भाई, we have to find out the zeros. Now we are given with polynomial x which is 3x square minus 4x plus 4. हमने सीखा है कि if you want to find out the zeros means हमें इसको factorize करना है, तो 3 times 4 is 12, 6 times 2 is 12, 6 minus 2 is 4. So 3x square minus 6x plus 2x minus 4 will make a pair 3x x minus 2 plus 2 x minus 2 x minus 2 3x plus 2, or whenever we are finding it we have to write zeros, right? Therefore x is equal to 2 or x is equal to minus 2 over 3. चलिए, तो ये हमारा बन गया zeros, right? Now what we have to do, so when you have to find out the next thing, हम यहाँ पे क्या करेंगे, here you are given with write a polynomial whose each of the zeros is 2 more than the zeros of p of x. अब मेरे पास ये zeros तो मिल गए, what we have to do, we have to add 2 more to it. Okay, so let us say add 2 to x is equal to 2 or x is equal to minus 2 by 3. So when I am adding 2 to this, therefore alpha is equal to 4 and beta will be minus 2 over 3 plus 2. We have to take the LCM. So which will be 4 over 3. We have this thing. अब आपको मैंने ये भी बताया है कि whenever you want to have a polynomial, अगर आपको कोई polynomials बनाने हैं, so you should first find out the alpha plus beta. मतलब हमें sum find करना है and we have to find out the product. Alpha plus beta, which is equal to 4 plus 4 upon 3. So if you take the LCM, so this will be 16 over 3. If you want alpha beta, so let us go alpha into beta, that is 4 multiplied by 4 over 3, which is again the same 16 over 3. Chalo, we got the product, we got the sum. कुछ नहीं करेंगे, we will just write down the thing. For a polynomial, what is required, p of x should be k into bracket x square minus sum plus product. Now we will substitute the value k x square minus
16/3x प्लस 16/3। अब देखो कभी कभार है ना बच्चों को कंफ्यूजन होता है व्हाट शुड वी डू विद द k। तो जब आपको ये एलसीएम जैसा कुछ दिखाई दे रहा है ना, सो इफ यू सब्स्टिट्यूट k मतलब क्या है कि यू आर मल्टीप्लाइंग समथिंग विद द एंटायर इक्वेशन। तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। इफ यू वांट टू, इफ यू मल्टीप्लाई और इफ यू टेक द एलसीएम 3, तो अब हमारा बन जाएगा 3x²। नो नीड टू टेक द एलसीएम फॉर द सेकेंड और द अदर टू टर्म्स। अब ये बन गया हमारा न्यू पॉलिनोमियल। आई होप दिस इज clear. So this entire question, when you do step by step, you will surely get the 5 marks. Now the next question, if the zeros of the polynomials are in the ratio, अब देखो रेशियो वाला दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो when you are given with the ratio, क्या है रेशियो में? So we are given with the zeros. So can we write alpha is to beta is equal to 3:4। अब ये भी आपने सीखा हुआ है, और नहीं पता हो तो देन यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई जब भी आपको रेशियो की साइन निकालनी है देयर इज सम कांस्टेंट। सो हियर व्हाट वी डू, हियर वी विल ऐड सम कांस्टेंट टू दिस। तो जब आप कोई कांस्टेंट इसमें डाल रहे हो तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3x and 4x। लेट अस से दिस इज योर अल्फा एंड दिस इज योर बीटा। यहाँ पे एक चीज खत्म हो गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट 12a² इज इक्वल टू 49b। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, अल्फा और बीटा दिए। कोई भी चीज को जब आपको प्रूव करना है ना, मेरे पास दो ही चीज है पूरे पॉलिनोमियल में, या तो आई यूज द सम और आई यूज द प्रोडक्ट, ठीक है। सो वी विल ट्राई हियर, वी विल गो विद द सम एंड द प्रोडक्ट इटसेल्फ, ठीक है। सो what is the formula for the sum? अब तो आपको पता होगा that the product for the sum is alpha plus beta is equal to minus b by a। अब देखो यहाँ पे alpha plus beta I can write 7x, पर इस केस में यहाँ पे जो पॉलिनोमियल दिया है ना वो क्या है, p of x is equal to x² प्लस ax प्लस b। तो प्लीज ये हमारे यूजुअल इक्वेशन जैसा नहीं है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पे b की जगह हमें लेना है a। सो दिस इज माई b, दिस इज माई c एंड दिस इज माई a। सो माइनस b बाई a मतलब ये हो गया हमारा माइनस a, राइट। अब यहाँ पे इफ आई मेक x एज अ सब्जेक्ट इट विल बी माइनस a बाई 7। तो ये मुझे एक वैल्यू मिल गई, दैट इज फॉर x। नाउ लेट अस गो विद द नेक्स्ट वन, वी विल फाइंड आउट द प्रोडक्ट। सो इन दिस केस अल्फा बीटा यानी क्या होता है, दैट इज c/a। इस केस में क्या होगा, b, राइट। अल्फा बीटा मल्टीप्लाई दिस, so 3 times, or you can write 3x into 4x, 12x² is equal to b. Can we substitute the value of x? If you substitute the value of x over here, so that is 12 minus a/7 whole square is equal to b. So 12a² by 49 is equal to b. And finally we can write 12a² is equal to 49b, hence proved. Is this clear? Chaliye. Now the next question. If alpha and beta are the zeros again of the polynomial this, then find the value of 1/2 alpha plus 1/2 beta plus 3 alpha beta. तो सिंपल चीज है, पहले तो हम क्या करेंगे, we will find out the sum and the product. So let us say p of x is equal to x² minus 2x minus 1. We just have to find out the sum and the product. So let us say alpha plus beta, which is equal to minus b upon a, will be 2.
alpha beta, which is c upon a, which is equal to -1, right? Now we have the thing, हमें मिल गया है हमारा alpha beta and everything, means we got the sum and the product. Now we will use this. The question is 1 upon 2 alpha plus 1 upon 2 beta plus 3 alpha beta. मैं कुछ नहीं करूंगी यहाँ पे, पहले इसको सॉल्व करूंगी. I'll take the LCM and I'll put the values. So 2 beta plus 2 alpha upon 2 times 2 is 4 alpha beta plus 3 alpha beta. I'll take out 2 as common. Alpha plus beta, 4 alpha beta plus 3 alpha beta. सब मिल गया हमें. Now they all are in the form of alpha and beta, sorry, in the form of sum of zeros and the product of zeros. We will directly substitute the value. So the value will be 2. Alpha plus beta is 2. Alpha beta is -1. So 4 into -1 plus 3 into -1. So 4 by -4 minus -3 cancel. This is 1. So -1 minus 3 is equal to -4. So this is our answer. अब देखो, पता है ये स्टेप है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है. पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, 4/4 इज -1 यहाँ पे. ठीक है, बच्चे क्या करेंगे, कई बार बच्चे जल्दी जल्दी में इसको 0 ही लिखेंगे एंड दे विल राइट डाउन द आंसर -3. और ऐसे बहुत प्यार से बच्चे करते हैं. सो डू नॉट गेट कंफ्यूज. व्हेन यू आर कैंसलिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ऑलवेज इट विल बी 1, वो 0 नहीं होता. ठीक है, चलिए. नाउ द लास्ट क्वेश्चन. हियर इफ द zeros of the polynomials are given to you, sorry, polynomial is given to you, they are the reciprocal of each other. ठीक है, सो मेरे पास p of x दिया हुआ है, which is ax square plus bx plus 2a by b. अब देखो, जब भी पूरे चैप्टर में, अगेन आई एम रिपीटिंग, कि जब भी आपको कोई भी पॉलिनोमियल दिया जाए, वहां से आपको कुछ भी सॉल्व करने को दिया जाए, फर्स्ट यू फाइंड आउट द सम एंड प्रोडक्ट. अगर आप जीरोस फाइंड आउट कर सकते हो तो वेल एंड गुड. अब इस केस में वी कैन नॉट फाइंड आउट द जीरोस, राइट? सो बेटर वी फाइंड आउट द सम एंड द प्रोडक्ट. तो यहाँ पे सम, दैट इज अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस b बाई ए विच इज इक्वल टू, अगेन यहाँ पे तो सेम ही दिया हुआ है, सब सही दिया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम ही है. सो आई एम नॉट राइटिंग इट अगेन, निकाल देते हैं. ठीक है, चलिए. देन प्रोडक्ट अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू c बाई ए. अब यहाँ पे कुछ अलग दिया है, 2a बाई b डिवाइड बाई a. तो ये हो गया हमारा a कैंसल, सो इट विल बी 2 अपॉन b. डन. सो ये है हमारा प्रोडक्ट, राइट? चलिए, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, we have one of the zeros are the reciprocal of other. So let us say let beta is equal to 1 upon alpha, क्योंकि एक दूसरे का reciprocal ही है, right? If you solve this, can I write alpha beta is equal to 1? मिल गया मुझे ये. अब मैं क्या करूंगी, मुझे फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ b. ठीक है ना, मेरे पास अल्फा बीटा है, 2 बाई बी दिया हुआ है. आप चाहो तो ये यूज करोगे, पर अगर ये यूज करोगे तो एक कहां से लाओगे, राइट? सो वी विल यूज दिस रिलेशन. इफ यू आर यूजिंग दिस रिलेशन, सो 2 बाई बी इज इक्वल टू 1. So b is equal to 2. So we got the value that is 2. I hope it is clear. देखा, see, basic is clear to you. I hope you did a number of sums. You even practice for the PYQs. Just go through the PYQs. You will understand that entire question, या पूरा बोलते हैं ना, पूरा chapter is only with the zeros, finding out the sum, finding out the product. Is this clear?
So here we have completed with the entire chapter of polynomials.